Hello everyone. Today we are going to start the first chapter of class 8 named as rational numbers. As we all know that there are various types of number that we have studied till class 7, that is like whole number, integers, negative number, positive numbers, natural numbers. So there is a special type of number which is called rational number. So basically rational number is a collection of numbers which is in the form of p by q, where p and q belongs to integer, that is p and q can take any value from the integers, and it is necessary that q should not be 0, as we know that, or you can say that integer is basically a fraction. We have studied a lot about fraction. So integer is not rational number is basically a fraction where there are two parts, numerators and denominators. Numerator and denominator. Numerator, like in this particular -4 by 5, -4 is numerator and 5 is denominator. Similarly 7 by 10, -6 by 16, 8 by 7. We have both the parts, numerator and denominator. Denominator is never 0, that is q. Here for -4 by 5, p is -4 and q is 5, whereas for 7 by 10, p is 7 and 10 is q. Similarly for all other rational numbers, p and q, p is numerator and q is denominator. Also we know that whole numbers and negative numbers are also numbers or rational numbers with the denominator 1. The whole number, natural number, these all comes under the group of rational numbers with the denominator 1. So the first topic we are going to discuss in rational numbers is properties of rational numbers. Properties of rational numbers, there are various properties of rational number, but I am focusing only on two properties, that is associative property and distributive property. Associativity, you have been studying this particular topic from last 3 years, that is from class 6, 7 and this is class 8. So associative, I do not think that I should डिफाइन इट. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसा कि हम जानते हैं कि 3 नंबर्स के लिए होता है, चाहे वो होल नंबर के लिए हो, नेचुरल नंबर के लिए हो या फिर इंटीजर्स के लिए हो, जैसा आपने पिछले साल पढ़ा था या फिर क्लास 7th में पढ़ा था. सो दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर 3 रैशनल नंबर्स एंड ओनली फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर. सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होता है. दैट इज़, इसमें क्या होता है कि अगर आप 3 रैशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हो, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप 3 रैशनल नंबर को जब हम ऐड कर सकते हैं तो पहले या फिर आखिर के 2 को हम साथ में ऐड कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी. सो हियर इन लेफ्ट हैंड साइड 2 by 3 प्लस इन ब्रैकेट 6 by 7 प्लस 5 by 4 विच इज इक्वल टू 2 by 3. नाउ यू कैन सी दैट द ब्रैकेट हैज शिफ्ट to the left side, that is 2 by 3 plus 6 by 7 and 5 by 14 is outside the bracket. Here these two sides, in order to satisfy, we will solve each side individually. Like left hand side 2 by 3 plus 6 by 7 plus 5 by 14. As we know that while simplifying, we solve the bracket side first, that is 2 by 3 plus 6 by 7 plus 5 by 14. So bracket solving bracket, the LCM of 7 and 14 is 14. So 6 into 2 plus 5 into 1 is equal to 2 by 3 plus 12 plus 5, which eventually gives us this 2 by 3 plus 17 by 14. So 28 plus 51 upon 42 is equal to 79 upon 42. This is what we get after solving the left hand side. So again, following the same procedure, we will solve, and what do we get? We get 79 upon 42, that is left hand side and right hand side are equal. So this is called associative property, where we can put the brackets or we can take any two of the 3 groups and add them together, and lastly we can add the third member. Similarly, the second property is distributive property. Distributive, you also know that multiplication is distributive over addition and subtraction. So this goes for rational numbers also.
that is if we multiply a rational number with the sum of two other rational numbers then it is distributed. जैसे कि यहाँ देखेंगे a बाहर है और b प्लस c ब्रैकेट में है, तो ऑन द राइट हैंड साइड a जाके पहले b से मल्टीप्लाई होता है प्लस फिर a c से भी मल्टीप्लाई होता है. सिमिलरली फॉर सब्ट्रैक्शन a इंटू बी माइनस c इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू c. दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. मतलब a b के पास भी जा रहा है, c के पास भी जा रहा है, दोनों में बट जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल 5 इंटू 2 5/2 in bracket 7/4 plus 9/16 which is equal to 5/2 according to that law. 5/2 into 7/4 plus 5/2 into 9/16. Another thing that if we need to know is it proof, is this correct or not, so here is the proof. Taking left hand side solving 5/2 is outside, so first of all we will take the bracket. हम जब पहले ब्रैकेट लेते हैं तो ब्रैकेट में सॉल्व 4 और 16 का एलसीएम, तो 16 होता है, सो 7 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 1 विच गिव्स अस 28 प्लस 9/16. जिस चीज़ को हम सॉल्व नहीं कर रहे होते हैं उसको साथ में लिखते जाते हैं हमेशा. यहाँ मल्टीप्लाई छूट गया है, उसको लिखते जाते हैं. ऐसा नहीं कि अगर हमें सॉल्व कर रहे हैं तो 5/2 छोड़ देंगे ना, वी विल टेक देम साइमल्टेनियसली. सो हियर 28 प्लस 9 इज इक्वल टू 37 एंड बाय सॉल्विंग वी गेट 135/32. दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड. अगेन राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो राइट हैंड साइड लाइक हियर वी हैव रिटन 5/2 इंटू 7/4 plus 5/2 into 9/16. 7 5 is 35, 2 4 is 8, 5 9 is 45, 16 2 is 32. Taking LCM of 32 and 8, it is 32, and solving that I get that what we get 185/32. Hence our distributive property stands true for rational numbers. That is a rational number, three rational numbers. A rational number is distributive over addition and subtraction. This is called distributive property of